Okay, uh, today our topic is variation and inheritance. Variation का मतलब होता है change, any variety or difference. बेसिकली जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आप देखते हैं कि आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो उनके आई कलर के अंदर, उनके आई स्ट्रक्चर के अंदर, उनके हेयर कलर के अंदर, उनकी शेप के अंदर, उनके हाइट के अंदर, उनकी वेट के अंदर चेंजेस होते हैं। इवन के पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स और इस हद तक भी होते हैं कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर भी वन बेबी का वेट डिफरेंट होगा फ्रॉम द सेकंड चाइल्ड, and the second child is different from the third one. Similar, their hairstyle, their hair color, their body physique is different from one another. So this is basically the variation. All the variations So, occur sir, variation by is in like variety of living organisms. yes, basically it is the variety, it is the difference among the living organisms. So basically, this variation occurs due to the change in the position of the genes. अब आपके पास ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह हेयर कलर है, हाइट है, लेट्स सपोज वेट है, इनको कंट्रोल करता है आपके क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन। अब आपके एक फैक्टर के लिए दो एलील होते हैं, दो पेयर होते हैं जीन के अंदर। अगर वो दोनों सिमिलर हों, कैपिटल शो हों, तो वो डोमिनेंट होंगे। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो एक डोमिनेंट। Capital is always dominant and the smaller letter that is showing that factor is recessive. Let's suppose आपके हेयर कलर का जो हम एग्जांपल लेके कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो हेयर कलर है वो डार्क ब्लैक है, तो आपके जो हेयर कलर के जीन है उनके अगर हम उन एलील को देखें तो वो कैपिटल बी है दोनों, क्योंकि आपके बालों का कलर जो है वो ब्लैक डोमिनेंट है। लेकिन इन केस आपका लेट्स सपोज कोई और सिबलिंग है, तो अब उसकी कलर का जो हेयर कलर है वो स्लाइटली ब्लैक या ब्राउनिश शेड में होंगे। तो उसके अंदर डिफरेंस ये है कि उसका एक एलील कैपिटल बी है और एक एलील स्मॉल बी है। उस वजह से जो कलर की डोमिनेंसी थी, जो ब्लैक कलर डोमिनेंट शो हो रहा था, अब वो थोड़ा रिसेसिव साइड पे है, क्योंकि अब दोनों एलील जो है वो डिफरेंट हैं, दोनों डोमिनेंट नहीं है। अगर प्रॉपर एलील डोमिनेंट हो तो उसके इफेक्ट्स कुछ और होंगे। अब सिमिलर आपका थर्ड अगर कोई सिबलिंग हो और उसके दोनों जो एलील है हेयर कलर के वो स्मॉल भी है, तो माइट बी पॉसिबल कि उसके जो हेयर कलर है वो कंप्लीट ब्राउन होगा। So all these variations occur due to the change in the gene. It is clear? सर Hello. सॉरी मेरा माइक बंद था। जी सर, समझ में आ गया। अम, अगर सर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहे वेरिएशन की, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? मतलब इन वेरी सिंपल Variation वर्ड्स। is in general terms जी। the changes or the differences in the physical structures or in the shape, height, weight, color of eyes and hairs of an individual from one and another is known as variation due to the change in the position of allele of genes on chromosome. ओके। यहाँ तक भी ठीक है कि चेंज और डिफरेंसेस इन द शेप ऑफ द आईज, शेप ऑफ द फेस, color, hair color, eye color, all these factors, physical factors basically, that are comparatively known as your variation, and these are known as individual variation. अब मैं आपको बता रहा था कि ये वेरिएशन का जो फिनोमेना है बेसिकली ऑल दैट अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द वेरिएशन ऑफ जीन, कि उन जीन्स पे जो एलील का पेयर है बेसिकली वो एलील एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, इस वजह से अब वेरिएशन कॉज हुई है।
क्योंकि पेरेंट्स से हमने लास्ट टाइम भी जब डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जब क्रोमोसोम्स आते हैं तो एक क्रोमोसोम का एलील जो है वो फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो दोनों कंबाइन होके अपना अफेक्ट शो करते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मदर से भी कैपिटल बी एलील आ रहा है एयर कलर का, फादर से भी कैपिटल बी आ रहा है एयर कलर का एलील, तो अब जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसके जो हेयर का कलर होगा वो डार्क ब्लैक होगा। लेकिन फादर से बी आ रहा है कैपिटल बी, मदर से स्मॉल बी आ रहा है, तो अब उसका कलर स्लाइटली ब्राउनिश होगा। लेकिन अगर मदर से भी स्मॉल बी आ रहा है, फादर से भी स्मॉल बी का एलील आ रहा है और वो जीन बन रहा है क्रोमोसोम के ऊपर, तो अब जो वो हेयर कलर शो करेगा बेबी के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर, आपके पास वो कलर अब जो शो होगा वो लाइट ब्राउन होगा। तो ऑल दीज प्रोसेसेस अकर थ्रू दी वेरिएशन इन दी जीन्स बेसिकली। अब जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होते हैं, उस प्रोसेस को नेम दिया जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज, अगर आप जनरल डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें इन जनरल वर्ड, इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जी अब जी। ये जीन किस तरह ट्रांसफर होते हैं, ये जीन किस तरह फादर से मदर से कलेक्ट होने के बाद पेरेंट्स के कंबाइन होने के बाद बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, सो दैट अकर्स थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Usually in our term we must say that he is similar to his father, or she is similar to her mother, or she is similar to her father. तो अब बेसिकली उसके अंदर प्रोसेस ये होता है कि उसके जो बेबी है या वो जो ऑफस्प्रिंग है जिसकी सिमिलरिटी उसके पेरेंट के साथ है, उस पेरेंट के जो जीन्स हैं वो उस बेबी के अंदर डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के शेप का, हेयर कलर्स का, आईज कलर का, वो जो स्ट्रक्चर है, कलर है, वो सेम नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फादर के अंदर एक कैपिटल अलील और एक स्मॉल अलील था, तो उस बेबी के अंदर हो सकता है कि एक कैपिटल अलील और एक स्मॉल अलील हो, जिसकी वजह से अब सिमिलरिटी उस बेबी की फादर की तरह नजर आती है। So all these information, all these हेलो सर। हेलो। सर आपका माइक बंद हो गया एकदम से। हेलो। हेलो। यस सर, अब आवाज आ रही है। okay. So all these data, all these characteristics from parents are transferred to their offspring. अब आप देखें कि मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और हैं, फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और हैं। फॉर एग्जांपल लेट टेक एग्जांपल ऑफ हाइट। मदर की हाइट छोटी है एज कंपेयर टू फादर, फादर की हाइट जो है वो एज कंपेयर टू मदर थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अब उनका जो बेबी होगा, या तो वो शॉर्ट होगा या वो टॉल होगा, या उसकी थर्ड कंडीशन ये है कि उन दोनों की मॉडरेट हाइट होगी। लेकिन आप ये देखते हैं कि मदर की हाइट, फादर की हाइट, इन दोनों का अफेक्ट बेबी पे किस तरह हुआ। तो उन दोनों का जब आपस में फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना होता है, तो दोनों के बेबी के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर स्क्रीन, आपको मैं बताता हूँ उसका। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। अब फादर के पास हाइट के जो जीन्स थे, फादर के पास लेट्स सपोज हाइट का जो जीन था वो कैपिटल एच डोमिनेंट था, जिसकी वजह से आपको फादर की हाइट क्या नजर आ रही थी, टॉल नजर आ रही थी। जबकि मदर के पास जो जीन्स थे वो दोनों स्मॉल जीन्स थे, दोनों रिसेसिव जीन्स थे, तो मदर की जो हाइट थी वो आपके पास अब छोटी नजर आ रही थी। अब पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना होता है, जब स्पर्म बनते हैं एग के पास जाते हैं, तो वो एक एक जीन लेके जाता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि
अगर फादर की तरफ से ये जीन आएगा, ये एलील आएगा, और मदर की तरफ से ये एलील आएगा, तो अब जो नया जीन बनेगा उसकी ये कंडीशन होगी, तो कैपिटल इज ऑलवेज डोमिनेंट। तो अब उसकी जो हाइट होगी वो फादर की तरह होगी। इज इट क्लियर? Yes, it's clear. ओके, लेट्स सपोज इन सेकंड केस, अगर फादर की तरफ से स्मॉल एच आए और मदर की तरफ से भी स्मॉल एच आएगा, तो अब दोनों एच स्मॉल हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों रिसेसिव अलील हैं, तो उस बेबी की हाइट क्या होगी? स्मॉल होगी। तो अब वो अपना अफेक्ट शो करेगा एज हाइट ऑफ द मदर। तो ये एलील्स का जो फिनोमेना है, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स व्हेन द एग एंड द स्पर्म कोलाइड and they conjugate, basically when they fertilize, the gene basically containing the allele, one from mother and one from father, they express their effects in the baby that might be similar to the that effect is similar to the father or that effect is similar to the mother। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हाइट जो है वो उसके फादर की तरफ भी जा सकती है, अगर फादर की तरफ से कैपिटल एच आएगा। अगर मदर की केस में फादर के केस से स्मॉल एच आएगा, तो मदर के पास ऑलरेडी जो एलील्स हैं वो स्मॉल एच हैं, तो वो बेबी के अंदर अफेक्ट शो करेंगे स्मॉल हाइट के। तो ऑल दीज जीन्स आर ट्रांसफर्ड by the process of sexual reproduction when the gametes, both sperm and eggs, are fertilized, egg from female and sperm from male, containing all the genetic information, collide and they fertilize, fuse together. The effect in which a one allele from mother and one allele from father is combined, and that effect is shown in the baby. If the effect is dominant from the father, then he has the characteristics of the father. If the allele is dominant from the mother, then he shows the characteristics of mother. So all the phenomena is dependent on the allele that is got through the father or mother. Is it clear? Yes, sir. Now, one thing, ये तो हो गए बाकी करेक्टरिस्टिक्स जो मैं भी आपको जनरल बता रहा था, हाइट, वेट, कलर के जनरल करेक्टरिस्टिक्स। बट जो सेक्स डिटर्मिनिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर मदर का कोई रोल नहीं होता, उसके अंदर मदर का कोई रोल नहीं होता। जो सेक्स के क्रोमोसोम्स हैं उनका अलील मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल के अंदर दोनों एलील होते हैं एक्स एंड एक्स। Yes. अब अगर फादर के केस के अंदर एलील आ जाए एक्स और मदर के पास तो ऑटोमेटिकली दोनों एक्स हैं, तो कोई भी आएगा तो वो एक्स ही होगा। तो अब जो नेक्स्ट बेबी के अंदर एलील शो होंगे वो एक्स एंड एक्स होंगे, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फीमेल, दैट विल बी Yes. फीमेल, Oh, female, exactly. because x and x are of female. Okay. Okay, but Okay. if the y comes from father and x comes from mother, then it will form x and y. Okay. So it will be a It, mixture of both mother and father. it actually depends on the father, because mother is homogeneous, having only x chromosomes. All the determination of the sex is through the father, because if if the allele from father comes x, then it will be a daughter, and if y comes, then it will be a son. Okay. Okay, so I So got it. the basically you can say कि जो आप कहें सेक्स डिटर्मिनेशन जीन्स जो होते हैं, ये जो एलील्स हैं, दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फादर। मदर का उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं होता। अदर देन सेक्स डिटर्मिनिंग हार्मोन्स, ऑल अदर हार्मोन्स या ऑल अदर जो फैक्टर्स हैं, जो जितने भी एलील्स हैं,
उन सब के अंदर मदर का हार्मोन आप कहते हैं कि अफेक्ट शो करता है। किसी बेबी की हाइट मदर पे होगी, किसी बेबी का वेट मदर की तरह होगा, किसी बेबी का फेस स्ट्रक्चर मदर की तरह होगा, बट the sex determining hormones are only and only responsible by the father, that are only controlled by the father basically. Is it clear now? Yes. Okay, now share this screen. Okay, sir, I will share it. Wait, teacher, it's very interesting, this variation in inheritance. Yes, it is a very much interesting topic, and a complete book of inheritance is written on this single topic. Really? That laws, Mendel laws of inheritance, basically, these are based on this thing. Okay. There's a complete book on this inheritance. Okay. Here it is, sir. Okay, now we are talking about genes and alleles, basically what they are. In the nucleus, at the time of division, at the time of cell division, there comes a thread-like structure known as chromosomes. ये बात आपने मेमोराइज करनी है कि जब भी सेल डिवाइड करेगा ओनली एंड ओनली उस टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। अदर वो क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस के अंदर फ्लोट करता है। Only when the cell is going to be divided, it comes into thread-like structure known as chromosome. Okay. It is clear. So, in chromosome, basically there are a very small uh, partitions, as you can see in the picture, that are known as genes. They are partitions, small partition sections of DNA that are known as genes. अब हर जीन के पास एक कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, दैट कोड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। बेसिकली दैट कोड ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करें किसी एक पीस की, जीन के ऊपर किसी एक पीस की, उस जीन के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन कोड होगी कि वो प्रोटीन बनाएगा आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनाएंगे, that carries the information in the coded form that are responsible for the formation of insulin. So genes basically are the code for the production of the protein that are responsible for showing the effect in your body. आपकी बॉडी के अंदर केराटिन जो आपके बालों को और नेल्स को स्ट्रेंथ देता है, दैट इज आल्सो कोडेड इन द जीन। अब वो कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितना प्रोटीन केराटिन बनेगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स प्रेजेंट इन जीन्स ऑन क्रोमोसोम। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज known as centromere. When the cell is going to be divided, I think we had studied mitosis and in meiosis, that when the cells divide, the spindle fibers are attached to the centromere. That part is responsible where the centromere got attached, and at the time of division, these chromosomes, basically chromosomes are in the form of pair, but when the cells divide, they got separate in the case of mitosis. Yes. तो आपको यहाँ पिक्चर के अंदर सिंगल क्रोमोसोम दिखाया गया है, बट एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर एंड दे गॉट सेपरेटेड in the case of mitosis only. Yes, sir, clear है। सर ये जो
टॉपिक है, शायद मैं इसको जब दोबारा पढ़ूंगा ना तो एक आध क्वेश्चन होगा, तो मतलब मैं आपसे पूछ लूंगा कल। ओके, अब आपके जो डीएनए होता है, बेसिक डीएनए जीन्स वगैरह, ये डिफरेंस क्या है? बेसिकली डीएनए जो है वो कंप्लीट स्टैंड है, जो हमने उस दिन सर आपकी आवाज कट रही है। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम सर, ईद मुबारक। कैसे हैं? क्या आपको भी ईद मुबारक। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा अब्दुल्ला, आपको एक बायोलॉजी ओ लेवल के मैंने अपनी ईमेल से एक लिंक शेयर किया है, आप उस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जी सर, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपको मैंने एक जीमेल के ऊपर एक इनविटेशन लिंक सेंड किया है अभी थोड़ी देर पहले, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वो आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर आपके जो भी लेक्चर्स और मटेरियल होगा वहाँ पर बायोलॉजी के हवाले से अपलोड होगा। अच्छा, मैं देख लूंगा सर, मैं फौरन ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, अगर आप अभी अगर चाहें तो अभी भी कर लें, जितनी देर तक हम आई थिंक सो सर रिकनेक्ट करते हैं, मैं इनको कंफर्म दोबारा चेक करता हूँ कि वो किस टाइम तक आते हैं। अच्छा, ये मैं ज्वाइन कर लिया। ओके। यस। हेलो सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन, बट आई वाज टॉकिंग दैट ये पूरा जो एक कंप्लीट स्ट्रैंड है, दैट इज नोन एज डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड। अगर आप उस स्ट्रैंड के छोटे छोटे पार्टीशन कर दें, पार्ट्स बना दें, तो उस पार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक कोड होगा, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगी, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि जी के सामने सी आएगा, ए के सामने टी आएगा, वो एक स्पेसिफिक वे में अरेंज होंगे। उस वे ऑफ अरेंजमेंट के अंदर एक कोड होगा, वो कोड रिप्रेजेंट करेगा एक प्रोटीन की फॉर्मेशन को, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को। ओके। So that is responsible for carrying a single factor or single, basically you can say a characteristics from. Is that clear? यस। Any question here? Hello? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। Okay. So, inshallah, we will start from this next chapter tomorrow, and keep this recording safe. Also, do WhatsApp
this recording सर to you. इसमें एक चीज और है, मतलब ये वाला पॉइंट जो नीचे दिया हुआ है, Just सेकेंड, मेरे पास बुक नहीं शो हो रही है आपकी। जी जी अभी बताओ। ये वाले लास्ट 4 पॉइंट्स। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली अब जब भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कोई बात करते हैं, जिस तरह अभी तक हमने सारी बात की है कि आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है वाया जीन, जीन के अंदर एक स्पेसिफिक कोड इंस्टॉल होता है, कोड उसके अंदर हिडन होता है जो कि ऑफस्प्रिंग के अंदर जाके अपना इफेक्ट शो करता है। तो इस बात का एविडेंस क्या है कि क्रोमोसोम जी हैं वो ही आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो सबसे पहले उसका एविडेंस ये है कि from one cell to another, the characteristics of the recipient cell change. For example, आप कहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान का क्रोमोसोम who is deficient of producing, आप ऐसे इंसान का क्रोमोसोम निकालते हैं जिसके अंदर जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो कम है, वो आप क्रोमोसोम किसी हेल्थी इंसान में इंसर्ट कर दें तो ऑटोमेटिक so it is information. Second one, if a chromosome are deliberately damaged, the characteristic of the cell change. For example, let's suppose in the case of uh, 1 second. In the case of a baby with the single kidney born, उसके अंदर क्या होगा कि अब उस जो क्रोमोसोम था जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन कोड थी कि ये आपने किडनी के प्रोटीन बनाने हैं जो किडनी को फॉर्म करेंगे, वो डैमेज हो गए थे, तो अब उस बेबी के अंदर एक किडनी नहीं बनेगी। ओके दिस इज आल्सो evidence. In some cells, the chromosomes are seen to swell when proteins are being manufactured in the cell. In some cells, अब आप किसी केस के अंदर आप अगर देखें कि जब प्रोटीन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा बनने लग जाती है, क्रोमोसोम के ऊपर से इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद राइबोसोम उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बनाने लग जाते हैं, तो वो सेल अपनी जगह से क्रोमोसोम जो है वो स्वेल करते हैं बेसिकली। अब क्रोमोसोम स्वेल किस तरह करते हैं कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप फोटोकॉपी करते हैं एक पेज को, उस पेज की एक बार फोटोकॉपी हो, 2 बार हो, 3 बार हो, जब बार बार उसकी कॉपी होती रहे तो ऑटोमेटिकली उसका जो पेज के ऊपर राइटिंग है वो डिम होती चली जाएगी हर बार फोटोकॉपी होने के बाद, और उस पेज की जो स्टिकनेस है वो भी खत्म हो जाएगी। सिमिलरली ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी जो स्टिकनेस है वो खत्म होती जाएगी और ये अपनी जगह से स्वेल करते जाएंगे। Similarly, the only difference between the nuclei of male and female cell is the presence of one particular chromosome, that is the sex hormone, sex chromosome। आपके अंदर अगर आप बात करें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर 22 पेयर्स जो हैं वो आपके ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, जबकि एक जो होता है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है। 22 पेयर्स आर नोन एज ऑटोसोमल chromosome, while 23rd pair, only one pair is known as sexual chromosome that carries the information of the sex of male and female, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि फादर के अंदर XY होगा और फीमेल के अंदर या मदर के अंदर XX होंगे। Only that chromosome is responsible for the differentiation of the male and female in the case of baby offspring. Any confusion? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर होगा। थोड़ी सी In the last point I am saying, last point ये चारों पॉइंट दोबारा करता हूँ। सर लास्ट 2 पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन कर दें। अब जब एक बार जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर से जब प्रोटीन पास करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, वो प्रोटीन बना देता है। वो मैंने आपको प्रोसेस लास्ट लेक्चर में बताया था
कि राइबोसोम जब उसकी ऊपर से क्रोमोसोमल ऊपर से गुजरता है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन कोड को रीड करते हुए उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बना देता है। बार बार जब वो प्रोसेस होता रहेगा तो क्रोमोसोम डैमेज होगा और स्वेल कर जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में ये लिखते हैं, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल सेल इज द प्रेजेंस ऑफ वन पर्टिकुलर क्रोमोसोम दैट इज सेक्सुअल क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जिनके 23 पेयर बनते हैं। उन 23 पेयर के अंदर से 22 पेयर को ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है, जो आपकी बॉडी हाइट, वेट, कलर, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, बॉडी फिजिक, शेप, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करता है। जबकि एक जो पेयर है दैट इज नोन एज सेक्सुअल क्रोमोसोम, वो डिफरेंशिएट करता है कि इधर दिस cell is of male or of female cell, because in the case of female cell it has having genes both allele double X, while in the case of male it is having gene with the allele 1X and 1Y। अगर उसके अंदर एक अलील पेयर डबल एक्स का होगा तो वो सेल फीमेल का होगा, अगर अलील पेयर के अंदर एक्स और वाई दोनों अलील होंगे तो दैट इज द सेल ऑफ मेल। So this Okay. is the only one pair, the sexual chromosomal pair is responsible for the determination of the sex of the offspring. Now is it clear? Yes. Any question? Yes. So if it is clear, then see you inshallah tomorrow, starting from here again Okay. up till recording, and also share it to me on WhatsApp. Okay, sir. I will post it in Google. Sir, I will try my best to share it on WhatsApp, but the recording is